अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम टू द चैनल GoTranscript की एक और नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम हमेशा की तरह कुछ जो क्वेश्चंस अपडेट किए हैं GoTranscript की वेबसाइट की तरफ से उनको हम सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ एक नई वीडियो ऑडियो उन्होंने अपलोड किया है उसको भी हम ट्रांसक्राइब करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो आपने वीडियो को लाइक ज़रूर करना, ठीक है। मैं गाइडलाइंस को बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे भी टाइम ज़रा सेव करना है, मुझे ऑफिस जाना है। सो पहला क्वेश्चन है, इफ़ देर इज़ अ कमेंट नेक्स्ट टू द ऑडियो फाइल सेइंग प्लीज़ यूज़ एम्बेडेड टाइम और बर्न इन टाइम व्हाट डू यू हैव टू डू। बी ऑप्शन राइट है यहाँ पे। A customer dictates instruction on how to transcribe audio. Do you have to transcribe the instruction word for word? A option यहाँ पे correct है. Sounds made by the person speaking are always on the same line in the present tense. The examination will consist dash two section of यहाँ पे right option है जी. When should time stamping every 2 minutes? ये इसका right answer है option F. Number 6 question है, files are transcribed in American English unless a client states otherwise. What is the correct format of time stamping change of a speaker? E option right है. The correct form of time stamping is option C is right. If you are working on the part of 15 to 20 minutes, time stamping every 30 seconds should start at 5. Option B right है. आखिरी सवाल है जी, द करेक्ट फॉर्म्स ऑफ अफर्मेशन फॉर फुल वर्बेटम इज और आर। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट है। तो जी मेक श्योर कर लें आपने सारी ऑप्शंस यहाँ पे सेलेक्ट कर ली हैं और चलते हैं जी अपने ऑडियो सेक्शन की तरफ। ओके जी, ये है आज का ऑडियो सेक्शन। ऑडियो प्ले करने से पहले आप लोगों को टिप्स दे दूं जी, आपने ओल्ड टेस्ट पे जाके थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेनी है। इसके साथ साथ कॉपी पेस्ट को बिल्कुल भूल जाएं, एआई सॉफ्टवेयर को आज से बिल्कुल भूल जाएं। आपने करना क्या है जी, आपने पूरी की पूरी ट्रांसक्रिप्शन को खुद टाइप करना है इस ट्रांसक्रिप्शन टूल के अंदर और ये वाले शॉर्टकट्स को आपने यूज़ करना है लाजमी, इनको भूलना नहीं है, ठीक है। ये चीज़ें आप जो गो ट्रांसक्रिप्ट की एआई सिस्टम चल रहा है उसमें वो एआई सिस्टम डिटेक्ट करेगा कि यार ये इंसान टेस्ट देने की कोशिश कर रहा है और उसमें आपके टेस्ट पास करने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। सो इसलिए मैं आपको रिकमेंड ये करता हूँ कि कॉपी पेस्ट को आप बिल्कुल भूल जाएं क्योंकि गो ट्रांसक्रिप्ट वाले उसको पकड़ लेंगे और वो आप टेस्ट पास नहीं कर सकते, ठीक है। तो चलते हैं आज की ऑडियो की तरफ। मैंने इसमें जो अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से, अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने फ़ाइल को किया ट्रांसक्राइब, और आप लोग इसमें कोई मिस्टेक पकड़ते हैं या कोई आइडेंटिफाई करते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने मुझे बिल्कुल वो बतानी है, ठीक है। तो चलें जी ऑडियो को करते हैं प्ले। This is the audio we're using for this particular GoTranscript audio test. There's this guy who was walking down the street in my neighborhood wearing a hoodie. He had a boom box on his shoulder and was playing some really good beats. I thought seriously about getting in step behind him and having a little parade. But then I decided he might take it the wrong way, so I resisted the temptation. However, I got in my Ferrari and followed him around at a discreet distance, let's say about 1,500 feet. He just kept walking to the beat, up and down the block for at least half an hour. Finally, I realized he was just an exercise walker, and the hoodie was 'cause it was raining. Not a lot, but just enough to make the windshield damp. I turned on the windshield wipers, but a long strip of rubber peeled off and the metal blade started to scratch the glass. Since my insurance is pretty crappy, I decided I better take care of it toot sweet. I peeled away from the beat walker and zoomed up to our local AutoZone. There, I had to look through a big, complicated table of numbers to find the correct size wipers for my Ferrari.
surprised to hear this, but my Ferrari is actually imaginary, by which I mean it's a Toyota. I wouldn't mind having a Ferrari, but the repair costs would be astronomical. Sort of like William Shatner in Blue Origin rocketing into space, astronomical. Needless to say, I didn't get Ferrari-sized wipers, but Toyota-sized. Specifically, the size I needed was 24 and 18 inches. See, wiper blades are different lengths nowadays. I remember the olden days when my dad bought an Edsel. The wiper blades were fixed in place, and you never had to replace them. Of course, the car didn't run very well, but that worked out okay since the wipers never worked anyway. Oh, by the way, I need to add some transcription type stuff here. Let's see. Oh, I know. Some cars are so small that the wiper blade sizes are 10 and 8. Now, you need to look at the guidelines to see how to correctly format those numbers. Also, when I say the rubber peeled off, it's not quite the same as when I say that I heard the bells of St. Mary pealing as my car limped by on 4 flat tires. तो फ्रेंड्स, ये थी आज की ऑडियो। मैं बिल्कुल भी किसी किस्म की गारंटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूँगा अगर आप लोग टेस्ट को फेल करते हैं मेरे कंटेंट को फॉलो करते हुए। आपने इसमें चेंजेस करनी है बिफोर यू सबमिट योर एप्लीकेशन। डोंट रिलाई ऑन मी टोटली 100%। और इसके साथ साथ लास्ट में यह है कि गाइस, आपकी जो भी सजेशंस हैं लीव देम इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोग कोई मिस्टेक को आइडेंटिफाई करते हैं तो वो भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बिल्कुल बता दीजिए। ये थी जी आज की वीडियो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय।